Dear friends, I am B. Singh, founder and director, Next IAS and 𝐻𝐻𝐸. Today we are going to talk about those important points which you have to take care before filling civil services application form. Civil services is a dream for many of you and you are preparing for it since long, and now the time has come to apply for it. If you make any mistake, a small mistake may result in disqualification. So you have to keep in consideration all those points which are required to be filled, that you are accurate, you don't make mistake. Any document which is required, you have that document, and most important, the date of document which is mentioned in the application form or in notification, that is something which you have to take care, especially for EWS category students and OBC category students. This is very important session. There are some other features also which we will talk about, and I hope this session will help you a lot while preparing as well as when you fill this form. Let us discuss one by one points. So the first point here is application form has to be filled online. In UPSC website, there are two parts, part 1 and part 2. Both of these you have to fill. Last date to fill this form is 22nd February and 6 p.m. Remember, and I will suggest you to fill well in advance. Don't wait for the last moment. Sometimes server issues occur and it becomes difficult. Center allotment which you will give the preference. The allotment of the center is on the basis of first apply, first allotment. The fee is just 100 rupees, and for females, SC/ST and for PWD students, the fee is not required. Graduation degree, this is the eligibility criteria. Graduation degree is required from any Indian university, but graduation degree आपको कब चाहिए? When you will fill the form for mains examination, and that is called detailed application form number 1. Please see, there are 3 stages of this exam: prelims, main and interview. As of now you are filling the form for the prelims exam. This is called stage 1. Then once the prelims result will be declared, you will qualify the prelims exam and you will be given opportunity to appear in main. Then you have to fill separate application form for the main examination, which is called detailed application form DAF 1. And once the result of the main examination comes, again you have to fill the form, and that is called DAF 2 before the personality test. So at every stage you have to fill this form. And now the key informations which you will fill in the first stage, name, date of birth, category and so on, these will remain static. In every stage these informations will remain static. You will not have opportunity to change. Next is the age limit is 21 to 32 year for the general and EWS candidates. For OBC and defense personnel, this age limit is 21 to 35. So plus 3 years relaxation. And those who come from the SC/ST category, for them 21 to 37. And if you are PWD candidate, right, then it is 21 to 42 years. Next we can see the number of attempts. General and EWS candidates have 6 attempts. OBC candidates have 9 attempts, as well as PWD candidates also have 9 attempts. SC/ST candidates don't have any limit, but age becomes the only criteria for these candidates. UPSC gives you the opportunity to withdraw the application. In case you think you don't want to appear again, then UPSC gives you opportunity to withdraw. From 1st March to 7th March 2022 you can withdraw. Attempt is counted when you appear in any one or both the papers of the prelims. But if you have filled the form of the exam but you have not appeared in any paper, then your attempt will not be counted. Category change. This change in category not permitted. यहाँ पर आपको focus करना है. Except in some special case. What are those special case? I will tell you. देखिए, category filling, whether you are in general or EWS or OBC or SC or ST or PWD, you have to choose your category very carefully. Once you fill this category, it will not be changed throughout the exam year, and in next attempt
when you face 2023, 2024, in that case you can change the category. But for this attempt, once you have filled in prelims, it will remain same throughout this exam for the mains and interview. So it has to be selected carefully, and care has to be taken especially by OBC and EWS category students, because OBC and EWS are based on economic, that is financial criteria. We will talk about the documents which are required. Proof of age, this document, and it should be as per matriculation or equivalent examination. Class 10th certificate has your date of birth, so that matriculation certificate. Proof of your graduation degree, that proof is required, लेकिन वो proof अभी नहीं चाहिए. That proof will be required during the stage 2, that is main exam. ID proof will be required. ID proof में कोई भी हो सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और any other ID proof issued by either central government or by state government. Photograph you have to upload, and that photograph should be in the size of 20 KB to 300 KB JPEG. Scanned signature is required. Email ID which you often see, phone number which you use personally, and in case you are EWS, OBC, SC, ST, PWD, any category out of these, then a document to support. This is star means it is only for the such category students. This is not required for the general. These are required for everyone. Undertaking is required by those students who are working either in the government sector, public sectors or similar any area. So for them undertaking is required. ये भी समझ लीजिए what is the undertaking. Undertaking that when you apply for UPSC, you have to inform to your department that you are applying for UPSC. इसकी एक undertaking देनी होती है, and you will sign that undertaking. Certificates जितने भी हैं अभी ये आपको सर्टिफिकेट जमा नहीं करना है. In prelims form they don't want the certificates. Certificates will be required during the main examination when you will fill detailed application form stage 1. उस समय आपको ये सर्टिफिकेट्स देना पड़ेंगे, लेकिन the date of these certificates should be before the closing date of the prelims examination form. And prelims examination form की closing date क्या है? 22 फरवरी 2022. कि EWS और OBC का जो सर्टिफिकेट है आपका, या SC ST के सर्टिफिकेट्स हैं, ये सर्टिफिकेट्स आपके क्लोजिंग डेट के पहले के बने होना जरूरी है. दैट इज वेयर दी स्टूडेंट्स मेक द मिस्टेक. स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अभी तो फॉर्म खाली जमा करना है, एट दिस स्टेज यू डोंट नीड दी सर्टिफिकेट्स, तो आप बाद में बनवा लेंगे. बट रिमेंबर, ऑल एप्लीकेशंस फॉर गेटिंग दी सर्टिफिकेट्स आर नाउअडेज ऑनलाइन, एंड नो ऑफिसर विल गिव यू एनी सर्टिफिकेट इन बैक डेट. इसीलिए आप अपना सर्टिफिकेट इमीडिएटली बनवाइए इफ यू हैव नॉट गॉट टिल नाउ. ओबीसी सर्टिफिकेट, मतलब मेरा दो जगह ज्यादा फोकस रहेगा. वन इज ईडब्ल्यूएस एंड सेकंड इज ओबीसी. व्हाट इज द नॉन क्रीमी लेयर? योर पेरेंट्स एनुअल इनकम शुड बी लेस देन 8 लाख as per the latest notification of 2017 of the OBC. That should be based on income of your parents for these financial year. Financial year, I hope you understand, 1st April to 31st March. So for 2020, 2021, एक तो ये हो गया फाइनेंशियल ईयर, सेकेंड फाइनेंशियल और थर्ड. इन 3 फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर सर्टिफिकेट. व्हाट इज द एनुअल इनकम? एवरेज ग्रॉस, यू सी दिस पॉइंट, एवरेज ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स, यहां पर पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, शुड बी लेस देन 8 लाख पर एनम ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर. मतलब इन तीनों फाइनेंशियल ईयर का, जैसे एक्स इनकम है, फिर वाई इनकम है, प्लस जेड इनकम है, डिवाइड बाई 3, दिस शुड बी लेस देन 8 लाख. ये क्राइटेरिया है. So X in this financial year, Y in this financial year, Z in this financial year, and divide by 3. This should be less than 8 lakhs. That is called the criteria of average gross income. Parental income is added. Mother's income,
फादर्स इनकम, बट आपकी अपनी इनकम नहीं ऐड होती. इफ यू आर वर्किंग इन एनी पब्लिक सेक्टर और वर्किंग इन एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और इन प्राइवेट सेक्टर, यू आर ऑल्सो अर्निंग, बट दैट इनकम विल नॉट बी एडेड फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स. किसी एक साल में आपकी 8 लाख से अधिक हो सकती है. लेट अस से कि इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर योर पेरेंटल इनकम वाज द मोर देन 8 lakh, but this was less than 8, this was less than 8, and overall comes less than 8, fine. Then the concerned authority will give you the certificate. So you will not have any difficulty. Now the certificate must be issued, ये देखिए, must be issued before the date of closing of the application date, that is 22nd February 2022. उस फॉर्म की लास्ट डेट के पहले का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए. तो यहां पर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं कि अभी वो टिक कर देंगे कि आई एम इन ओबीसी, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उनको ये क्राइटेरिया नहीं पता है, और सम मिस्टेक कैन हैपन. ईडब्ल्यूएस, अभी तो हम ओबीसी की बात कर रहे थे, ईडब्ल्यूएस में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है दोस्तों. दिस इज वेयर द कैंडिडेट्स मेक द मिस्टेक. इसका नाम है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट. यहां पर एसेट वर्ड आ गया, दैट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सी. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, दे आर नोबडी एल्स बट द जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर कैंडिडेट्स, राइट, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है. यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फैमिली इनकम, जबकि ओबीसी में क्या यूज किया था, पेरेंटल इनकम. तो फैमिली और पेरेंटल इनकम में फर्क है, that you have to understand. Certificate should be prepared before the closing date of application, that is 22nd February 2022. आप जो प्रीलिम्स का अभी फॉर्म भर रहे हैं उसकी लास्ट डेट के पहले का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए. इसके क्राइटेरिया क्या है, द ग्रॉस इनकम ऑफ द फैमिली मस्ट बी लेस देन 8 लाख पर एनम इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2021. देखो फर्क आ गया ना. ओबीसी में क्या था, ये 8 लाख एवरेज इनकम थी, 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज था, जबकि वहां पर पेरेंटल इनकम थी खाली. यहां पर फैमिली इनकम है, और वो भी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए चाहिए, ओनली 1 फाइनेंशियल ईयर विच इज प्रीवियस वन जस्ट बिफोर दिस ईयर, एंड फैमिली इनकम. अब फैमिली एंड पेरेंटल में क्या फर्क है. इनकम कवर्ड इज फ्रॉम ऑल सोर्सेस, ग्रॉस लिखा हुआ है ना, ग्रॉस इनकम. ग्रॉस इनकम इज नॉट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स. टैक्स भी ग्रॉस इनकम का पार्ट है. इट इज नॉट ए प्रॉफिट. प्रॉफिट अलग होता है, इनकम अलग होता है. टोटल इनकम, जितना टोटल पैसा आपकी फैमिली ने कमाया, और उसके बाद फिर आप कुछ टैक्स जमा कर दोगे, कुछ आपके पास बच जाएगा. अगर टैक्सेबल नहीं है तो कोई बात नहीं. तो इनकम कवर्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेस, चाहे उसमें सैलरी हो, एग्रीकल्चर हो, बिजनेस हो, या किसी प्रोफेशन से. टोटल इनकम. फैमिली, व्हाट इज द फैमिली. फैमिली इंक्लूड्स कैंडिडेट, हिज और हर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, भाई बहन, हु आर बिलो द एज ऑफ 18. तो डिपेंडेंट हो आपके फैमिली में कौन कौन है, यू, योर फादर, योर मदर, एंड योर दोज सिबलिंग्स हु आर यंगर देन 18. इन सब की इनकम पिछले फाइनेंशियल ईयर की कितनी होनी चाहिए, लेस देन 8 लाख. इफ इट इज लेस देन 8 लाख, then you are treated as EWS candidate, and if you are a EWS candidate you can apply in the EWS, क्योंकि EWS का कट ऑफ कम जाता है. So if you can apply with the EWS, तो certificate must be produced or must be prepared before 22nd February. इसमें income and asset less than 8 lakh. But what about the asset? Asset का मतलब है family asset should not be any of the following. You should not have more than 5 acre of the agriculture land. मतलब 5 एकड़ से कम होना चाहिए, even not 5 एकड़, less than 5 एकड़ होना चाहिए agriculture land. Number 2, residential, any of the above कह रहा है, any, should not have any of the above, मतलब इनमें से कुछ भी आपके पास नहीं होना चाहिए. Residential flat of 1000 square feet and above. Plot, residential plot 100 square yards या उससे ऊपर नहीं होना चाहिए. Yard and feet, 1 yard is 9 square feet. तो 100 square yard means 900 square feet. तो 900 square feet से अधिक का आपके पास प्लॉट नहीं होना चाहिए अगर सिटी में है, मतलब म्यूनिसिपैलिटी के अंदर है. अगर आप म्यूनिसिपैलिटी से बाहर हैं, आप छोटे टाउन में हैं, या जहां पर म्यूनिसिपैलिटी नहीं है, या शहर में भी म्यूनिसिपल एरिया के बाहर हैं, या रूरल एरिया में है, तो इसकी लिमिट है 200 स्क्वायर यार्ड.
200 स्क्वायर यार्ड का मतलब हो गया 1800 स्क्वायर फीट। तो 1800 स्क्वायर फीट से अधिक का अगर आपके पास घर है तो EWS में नहीं है। 5 एकड़ से अधिक लैंड है तो EWS में नहीं है। 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा फ्लैट है तो आप EWS में नहीं है। और 8 लाख से इनकम ज़्यादा है फैमिली की तो EWS में नहीं है। तो EWS का जो आपका क्राइटेरिया है वो ये है। तो EWS में और OBC में दोस्तों डिफरेंस है। OBC में एसेट नहीं काउंट होते, खाली इनकम काउंट होती है और वो भी खाली पेरेंट्स की इनकम काउंट होती है, जबकि EWS में एसेट एंड इनकम दोनों काउंट होते हैं। और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ, जो इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं कि अभी सर्टिफिकेट बनवाया नहीं है, EWS को फिल कर दिया और एग्जाम का फॉर्म सबमिट कर दिया, बाद में प्रीलिम्स में पास हो गए, डैफ के टाइम पर वो UPSC विल आस्क यू टू सबमिट दी EWS certificate which is prepared before 22nd February 2022। अब बैक डेट में कोई भी ऑफिसर आपका सर्टिफिकेट नहीं देगा बिकॉज द एप्लीकेशंस आर ऑनलाइन नाउअडेज एंड यू कम इन ट्रबल। UPSC is very transparent but very strict. They are very strict in all rules, norms. You have to fulfill those criteria timely. इस चीज को ध्यान रखिए। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है ये भी दे रखा है, OBC का जो फॉर्मेट है वो भी दे रखा है, जो SC/ST का फॉर्मेट है वो भी दे रखा है UPSC के वेबसाइट पे। सो प्लीज गेट एंड इंश्योर दैट गेट द डॉक्यूमेंट इन द सेम फॉर्मेट, दैट इज इंपॉर्टेंट। Plan of examination, although you know this, but just I am briefly giving the idea, those who are fresher and those who will be planning to fill this form next year, कि this exam is conducted in 3 stages. First stage is preliminary exam, which is objective type. Second stage is main exam, which is subjective type, and third stage is personality test, which is the verbal communication. So stage 1 is the preliminary examination and this is objective type. Prelims has 2 papers and each of 200 marks. दोनों पेपर 200 marks के होते हैं and each paper is of 2 hours. Both papers are based on multiple choice questions and there is negative marking. पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का. This GS is having 100 questions and 100 questions to be answered in 2 hours and this is the main paper. इसी के बेसिस पर prelims qualify होगा या नहीं डिसाइड होता है. The second paper is a test for your aptitude. So it is called CSAT, Civil Services Aptitude Test. This has reasoning aptitude and English comprehension. So this is having 80 questions to be answered in 2 hours and each question of 2.5 marks. So again 200 marks का ये भी पेपर है and the qualifying marks are only 33%. तो आपको यहाँ पर 33% स्कोर करना होता है, you will get qualifying. So this, अगर आपका CSET क्वालिफाई हो गया तो ऑन द बेसिस ऑफ GS मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड और GS के कट ऑफ के बेसिस पर आप मेंस के एग्जाम को लिख पाएंगे. सो दिस इज द क्राइटेरिया. वी कैन सी द नेक्स्ट इज मेन एग्जामिनेशन स्टेज 2 मेन एग्जाम विच इज सब्जेक्टिव टाइप डिस्क्रिप्टिव आंसर. अब यहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर एक्चुअल एग्जाम तो ये है क्योंकि एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो गया देयर आफ्टर प्रीलिम्स के मार्क्स का कोई यूज नहीं है. प्रीलिम्स मार्क्स बिकम ऑब्सोलीट once you have cleared the prelims mark no longer relevant. Mains score and the interview score is the one which will decide your rank and selection. So in main there are 2 qualifying papers and remember yahan many students don't know in main qualifying criteria is 25% not 33%, जबकि CSET में 33% था. So the qualifying papers include first one is Indian language and second one is English. English is compulsory for everyone. Indian language having 300 marks 3 hours. English also 300 marks 3 hours. And there are 22 languages mentioned in the our 8th schedule of constitution और उन्हीं में से कोई एक लैंग्वेज आपको लेना है. You may choose Hindi, you may choose Marathi, Kannada, Telugu, Malayalam, Tamil, any language. So one of the languages which you have to qualify and English you have to qualify. ये just qualifying है, इनके marks merit में count नहीं होते. So this is important. These are qualifying papers which are actually included for the merit. और ये पेपर हैं essay पेपर, GS पेपर, optional papers.
तो ऐसे पेपर एक ही होता है, देयर इज ओनली वन पेपर and that is 250 marks as you can see. This is again of 3 hours paper. This is essay paper, and in GS there are 4 papers, GS 1, 2, 3 and 4, each of 250. So 1000 is the weightage here and 250 is the weightage here, and optional having the 2 papers, paper 1 and 2, so 500 is the weightage in optional. Optional की भी लंबी लिस्ट है, only one optional subject you have to decide. Out of the 26 subjects, any one you can decide. It is your choice. So you can choose one optional. So this becomes 250, this becomes 1000, this becomes 500. So total 1750 marks is the weightage of the main examination. Those of you who will clear the main examination, they will go for the interview or personality test. The third stage is stage 3 is personality test, which we call interview, and 275 is the weightage of the interview. अब मेन के पहले भी आपको एक फॉर्म भरना था, which was DAF 1, and now before interview also you have to fill a form which is called DAF 2. DAF is detailed application form. So final result is based on mains score and interview score. So this is 1750 plus 275, it is 2025. So out of 2025 your final merit is prepared, and that is how the selection happens. तो दोस्तों, I have told you कि this is the way of the examination is conducted. There are many more things which are important. Cut off of the last 2020 and 2019 exam. 2021 का अभी डेटा नहीं मिला है because exam is still going on. Out of 200, whereas in 2019 the cutoff was 98. This is I am talking about the general category. When we see the OBC, you can see this 89.12, and SC, then ST. So you can see that. So this is SC and this is ST. SC category 74.8, ST category 68.7, EWS देखिए कम था ना, EWS is 77.5, जनरल 92. इसीलिए EWS के लिए लोग प्रेफर करते हैं, but the criteria to fulfill EWS is really difficult. Last year in 2019 also 98 was the general cutoff, 95 was the OBC cutoff, 82 was SC cutoff, ST cutoff was 77, and EWS category cutoff was 90. And this is given here mains cutoff and final. Final cutoff out of the 2025, 944, 907, 875, 876, 894. So this is how the cutoff is moved in final 2019, 2020. Highest cutoff is of general, second is OBC, then third is EWS, fourth is SC, and last cutoff, minimum cutoff is ST. So this was my discussion on the basis of notification of the Civil Services Examination 2022. The last date to apply is 22nd February. You must fill this form timely but carefully भरिए, कोई गलती ना हो, खास करके EWS और OBC candidates के लिए. तो I hope this information will be useful to you. Prepare your own. If you want any support from Next IAS, don't hesitate. We are always there to support you. Thank you very much.